Assalamu alaikum, good evening and welcome to Rangan Bhari Sham with me Kiran Mir. कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, मज़े में आहियो? ऐं जीअं त ॾींहों ॾींहुं गर्मी वधंदी थी वञे पई ऐं तमामु घणो एहतियात कयो। हा, समुंडियूं हवाऊं लॻी रहियूं आहिनि पर गर्मी जी शिदत बि बरक़रार आहे, तमामु घणी गर्मी आहे ऐं ॿिनि टिनि ॾींहंनि खां पोइ त शायदि हीअ गर्मी अञा वधे। ऐं ॿाहिरि त पंजाब में जीअं ॾिसिजे या कराची खां ॿाहिरि निकिरूं था त शदीद गर्मी आहे। छो त मां तव्हांखे पहिरियां बि ॿुधाए चुकी आहियां त बे ऑफ बंगाल मां थींदो हिकिड़ो सर्कुलेशन आहे जेको बहरियाए अरब में आहे। हींअर भर वारे मुल्क में जेको आहे मींहुं वसाए रहियो आहे ऐं उहो जेको आहे जॾहिं कराची जे वेझो खां यानी साहिली पट्टन खां गुज़रंदो त उन जी शिदत वधंदी, बरसातूं बि थींदियूं, ज़ाहिर गर्मी बि थींदी आहे, हब्स बि थींदो आहे ऐं मेटरोलॉजिस्ट जो चवणु इहो ई आहे त इहो समुंडी तूफ़ान बि थी सघे थो, उन जी शिकिल बि अख़्तियार करे सघे थो। पर पहिरें नालो अल्लाह जो, रब जॾहिं आहे त पोइ असांखे फ़िक्र करण जी का बि ज़रूरत कोन्हे। इनशा अल्लाह साईं ख़ैरु कंदो, समुंडी तूफ़ान कोन ईंदो, कुझु बि कोन थींदो, ख़ैरु थी वेंदो, बरसातूं थींदियूं ऐं जेके बरसातूं हमेशह थींदियूं आहिनि ऐं मामूल खां कुझु वधीक ॿुधी रहिया आहियूं त बरसातूं थींदियूं, पर जॾहिं बि दुआ कजे अल्लाह साईं खां त ख़ैर वारी ई बरसाति घुरिजे। ऐं उन खां अलावा हिन मौसम में जेको आहे न ख़ासि करे ही वायरल्स जेके मां पाण हिन वायरल मां विढ़ी करे उथी आहियां, निकिती आहियां ऐं अॼु इलाही तबियत मां पंहिंजी बहितर महसूसु करे रही आहियां बनिस्बत कल्ह जे। छो त काल्ह बि मुंहिंजी एॾी ख़ासि तबियत न हुई सही, अॼु मुंहिंजी अल्हम्दुलिल्लाह तबियत इलाही बहितर आहे। त इन वायरल खे जेको आहे न 5 खां 6 ॾींहं लॻनि था प्रॉपर ठीकु थियण में, पर अञा बि मां जेकॾहिं तव्हांखे ॿुधायां त जिस्म में सूरु अञा बि आहे। तव्हां यकीन कयो त हीउ ॾाढो ख़राबु क़िस्म जो वायरल आहे जेको सीअ सां त बुख़ार करे ई करे थो, पर जिस्म में सूरु जेको थिए थो न उहो सफ़ा मारे थो छॾे पियो। ऐं इन में का बि एंटीबायोटिक यूज़ न कजो, डॉक्टर ॾे बेशक वञो, डॉक्टर खां मेडिसिन्स वठो, पर नॉर्मल मेडिसिन्स खाओ ऐं काई बि एंटीबायोटिक यूज़ न कयो हिन में। छो त अॻु में ई तव्हांजी तबियत ख़राबु आहे, तव्हां डाउन फील था कयो पिया, सुस्तु थी था वञो, वरी जॾहिं तव्हां हिन में एंटीबायोटिक खाईंदा त तव्हां वेतर सुस्तु थी वेंदा। छो जो एंटीबायोटिक हैवी हूंदियूं आहिनि, तव्हांखे वेतर सुस्तु कंदियूं आहिनि। ऐं मूंखे त कुझु बि नथो वणे खाइण पीअण में, ऐं वात जो टेस्ट एॾो कोड़ो थी थो वञे, ईअं थो लॻे ॼण कोरोना वारो टाइम मूंखे यादि थो अचे त जंहिं टाइम में मूंखे कोविड थियो हुयो त मूंखे उहे ई ईअं थो लॻे त ॼण मूंखे वाक़ई कोरोना थी वियो आहे। वात जो टेस्ट ग़ाइबु थी वियो आहे, का शइ नथी वणे सवाइ फ्लेवर्ड मिल्क जे। ऐं मां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु फ्लेवर्ड मिल्क हींअर पी रही आहियां जेको मूंखे वणे थो, बाक़ी मानी जो टेस्ट नथो वणे, न पाणी थो वणे, पाणी त ॼण अलाए छा ॼण ज़हर थो लॻे, एॾो कोड़ो पाणी थो लॻे, पर ज़ाहिर आहे गर्मी आहे, पीअणो थो पए पियो। इन जे करे त पंहिंजो पाण खे हाइड्रेटेड रखूं। ऐं हींअर त जेको आहे मार्केट में फ्रूट बि सुठो आयल आहे त कोशिशि कयो पाण खे हाइड्रेटेड रखो, फ्रूट बि खाओ, पाणी बि पीअंदा रहो त जीअं तव्हां हाइड्रेटेड रहो। ऐं प्लीज़ हीअ जेको वायरल जेके आहिनि ऐं गर्मी जेका आहे हिन गर्मी खां बचो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे बि पंहिंजे वॾनि खे बि हिन गर्मी खां बचायो। अननेसेसरी घरनि खां ॿाहिरि न निकिरो ऐं पंहिंजो एहतियात लाज़मी कयो। जीअं त अॼुकल्ह असां पंहिंजो हिकिड़ो सेगमेंट लीगल एड वारनि सां कंदा आहियूं, त अॼु बि असांजो जेको हिकिड़ो सेगमेंट आहे उहो उन्हनि जे नाओ आहे। ऐं तव्हांखे का बि शिकायत आहे, चाहे उहा असांजी भेण हुजे, चाहे उहा असांजो भाउ हुजे, कंहिं बि क़िस्म जी तव्हांखे शिकायत जेकॾहिं आहे, तव्हां एडवाइस वठणु चाहियो था त 0800 708006 इन ते तव्हां कॉल कयो, जेको सिंध लीगल एडवाइज़री कॉल सेंटर आहे। तव्हां इन्हनि खां फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा वठी सघो था, तव्हां इन्हनि खे पंहिंजी परेशानी ॿुधाए सघो था ऐं हू तव्हांखे बहितर हल हिन जो ॿुधाईंदा। सो असां सां गॾु रुख़साना परवीन खोखर हिते मौजूदु आहिनि, जेके लीगल जेके सीनियर प्रोग्राम मैनेजर एंड एडवोकेट फॉर ह्यूमन राइट्स हैं, सो उनके भली कार करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक किरण, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड टू सी यू अगेन।
थैंक यू. और आपका जवाब सुन के अच्छा लगा, हालांकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है. नहीं, अब काफ़ी बेहतर हूँ, आपको देख के अच्छा मुझे हो देख के गया। अच्छा जी, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर क्या काम कर रहा है, लेकिन आज जो हमारे जो न्यू देखने वाले हमारे जो व्यूवर्स हैं, जिन्होंने हमारा पहला शो ना देखा हो, आज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हो, एक बार फिर आप उन्हें बता दें कि सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर क्या कर रहा है. जी बिल्कुल. और अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को जो हमें इस वक्त देख रहे हैं. वंस अगेन, सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है. पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए, ख़ास तौर पर सिंध की आवाम के लिए एक तोहफ़ा है. अपनी नौइयत का पाकिस्तान में पहला इदारा है जो आपको घर बैठे मुफ्त इंसाफ तक फरहमी का रास्ता फराहम करता है. आप एक कॉल करते हैं और हमारे कॉल सेंटर पे हाई कोर्ट के इनरोल्ड माशाल्लाह सीनियर वकील आपको जो है मुफ्त कानूनी मशवरा फराहम करते हैं. और इसके अलावा जो है हमारे पास जो जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब हैं, पाकिस्तान के मशहूर मारूफ वकील हैं, वकील रहे हैं आप, जज हैं आप, सिंध हाई कोर्ट के आप चीफ जस्टिस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फार्मर जज हैं. रिटायर्ड जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब का नाम माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान में सब लोग जानते हैं. उनकी चेयरपर्सनशिप में ये इदारा चलता है. इसके अलावा जस्टिस आरिफ हुसैन खिलजी साहब एक हमारे मायानाज जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के. वो इस वक्त हमारे चीफ लीगल एडवाइज़र है की हैसियत से इस कॉल सेंटर में मौजूद होते हैं. आपको जो भी मशवरा दिया जाता है, आपको जो भी कानूनी दिक्कत होती है, तो वो जस्टिस साहब की नज़र से गुजरता है आपका मशवरा, आपका मसला, और वो उस मशवरे को देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, और आप तक जो है वो बेहतर से बेहतर सर्विस हम फराहम करने में पूरी टीम कंट्रीब्यूट करती है. तो हम कह सकते हैं कि सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर आपका दोस्त इदारा है. हुकूमत सिंध की तरफ से एक बेहतरीन प्रोग्राम है. आवाम की वो जो हुकूमत सिंध का एक नारा है ना कि हुकूमत सिंध खिदमत में सबसे आगे, तो ये खिदमत में सबसे आगे का एक जो है वो नारा, उसकी उस ख्वाब की एक तकमील है. एक आपके पास सहूलत मौजूद है, तो प्लीज़ आप इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं. अगर आपको कोई ख़ुद कानूनी मसला नहीं है तो अपने इर्द गिर्द नज़र डालें. हो सकता है किसी बहन बेटी को, किसी हमसाई को, किसी साथ में किसी रिश्तेदार को, किसी को भी पता है. हाँ. आप ये नंबर, मैं कहती हूँ कम्युनिटी में चने की तरह बांटें. ये सदका जारिया है. सही. अच्छा, मुझे रुखसाना ये ज़रूर बताइए कि एक अगर बहन कॉल कर रही है, बहुत परेशान है, ठीक है ना, और ज़ाहिर है घर वालों ने या XYZ उसके ससुराल में किसी ने भी या मुआशरे ने उसको इस हद तक परेशान किया हुआ है कि वो मजबूर हो गई है वो ये नंबर मिलाने के लिए. ठीक है ना, कोई भी खुशी से ये नंबर नहीं मिलाता. ठीक है, हर कोई ज़ाहिर परेशानी में ही ये नंबर मिलाएगा. उसने अगर नंबर मिला दिया, उसने अपना एक मैटर आपसे डिस्कस कर दिया, क्या ये हमारी बहनों की बात को कॉन्फिडेंशियल रखता है और राजदारी बरतता है, या फिर वो ऐसे फैलती है बात कि फिर वो बाद में कहेगी कि यार मैंने ये बात यहाँ करके गलती कर दी? बहुत अच्छा सवाल किया है. और आजकल तो हम किसी के साथ भी अपना ज़ाती मैटर डिस्कस करते हुए 10,000 दफ़ा सोचते हैं. इवन कोशिश यही होती है कि अपना राज अपने तक ही रखें, अपना मसला, कि ज़माना उस तरह से नहीं है. लेकिन किरण, वो जिस तरह कहते हैं पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती. ये इदारा जो है इंतहाई एक ज़िम्मेदारी के साथ काम कर रहा है, ज़िम्मेदार इदारा है. और आपका कोई भी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है या कोई भी आपकी बात है उसको किसी सूरत हम लीक आउट नहीं करते. एक चीज़. नंबर 2, आप अपना नाम जो भी बताना चाहें, ना भी बताएं तो भी कोई वो नहीं है, मसला नहीं है. नहीं, एक सेकंड आपकी बात यहाँ पे बीच में कट करूँगी, क्योंकि अगर नाम नहीं बताएंगे तो कार्रवाई आगे की कैसे होगी? श्योर. लाइक दो स्टेप्स है ना. एक स्टेप तो ये है कि आप सिर्फ मशवरा करना चाह रहे हो, ठीक है, कि मुझे आगे क्या करना चाहिए. अगर आपको लगता है कि मैं नाम नहीं बताना चाह रहे तो हमें कोई मसला नहीं है. ठीक है, आप बगैर नाम बताए भी आप अपना मशवरा तो करें. अपनी ज़िंदगी में आसानी तो ढूंढें कि आगे करना क्या है, ठीक है, इसका हल क्या है. और दूसरा, अगर आप हमारे थ्रू जो है वो अपने केस को रेफर करना चाह रहे हैं
ہمارے کسی وکیل کے تھرو جو ہے آپ آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں یا ہماری سپورٹ فردر ریکوائرڈ ہے تو آپ اپنا میٹر ڈسکس کریں. آپ کا بالکل تمام چیزیں جو ہیں وہ کانفیڈینشیل رکھی جائیں گی. آپ سمجھیں کہ مجھے بھی اجازت نہیں ہے کہ آج حالانکہ میں کال سینٹر میں ایک سینئر پروگرام مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہی ہوں, میں بھی بلا ضرورت جا کے CRM کے ڈیٹے پہ نہیں دیکھتی کہ کس کا کیا ذاتی مسئلہ تھا. صحیح ہے, تو وہ بالکل کانفیڈینشیل ہوتا ہے, پورے اعتماد کے ساتھ کریں. اب تک ہمیں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کالز کر چکے ہیں. یقین کریں پچھلے 10-11 مہینوں میں بلکہ 9-10 مہینوں میں 40,000 سے زیادہ کالز آ چکی ہیں. ہم لوگوں کے لیگل کیوریز کو ہم سالو کر چکے ہیں. صحیح. تو یہ عوام کا ٹرسٹ ہے اور گورنمنٹ آف سندھ پر ٹرسٹ ہے, ہمارے ادارے پر ٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے 600 سے زیادہ شہروں سے ہمیں کالز آتی ہیں. صحیح. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ خواتین کی تعداد اس میں دن بدن بڑھ رہی ہے. کانفیڈنس آ رہا ہے نا. یس. اور خواتین میں میرڈ خواتین بھی ہیں, ان میرڈ خواتین بھی ہیں, بزرگ مائیں بھی ہیں. کوئی میں مثالیں دے کے بتاتی ہوں کہ وہ بیٹیاں بھی تھکی ہوئی ہیں جو تنگ مظلوم بیٹیاں ہیں جن کو والدین یا باپ ہراس کر رہے ہیں یا جائیداد میں حصہ نہیں دے رہے ہیں یا آگے فردر پڑھائی کے لیے کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں یا کسی قسم کی حق تلفی کر رہے ہیں. بیگمات یا وہ وائف یا وہ خاتون بھی شامل ہے جو اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہے, اس کی حق تلفی کی جا رہی ہے. وہ والد بھی شامل ہیں اس میں کہ اگر خدا نخواستہ اس کا کوئی کہیں پہ میرڈ لائف میں حق تلفی ہو رہی ہے یا کسٹڈی کے میٹرز میں اس کو کوئی پرابلم آ رہا ہے. تو مرد, عورت, خواتین, بزرگ, والدین سب ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. آپ لوگ اپنے حق کے لیے کال کریں تو بلا جھجک کال کریں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, کس وقت کال کر سکتے ہیں؟ صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک آپ ہمیں لائیو کال کریں. اس وقت بھی اگر 5 نہیں بجے تو آپ ابھی بھی لائیو کال کر کے دیکھیں 0800-70806 پہ. تو ہمارے وکیل جو ہے ڈائریکٹ آپ کی کال لیں گے. آپ مرد وکیل سے بات کرنا چاہیں موسٹ ویلکم, آپ خاتون وکیل سے بات کرنا چاہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ آسانی محسوس کر رہے ہیں, آپ بلا جھجک کہیں کہ بھئی مجھے کسی مرد وکیل سے بات کرنی ہے یا مجھے کسی خاتون وکیل سے بات کرنی ہے, آپ کی کال ٹرانسفر کر دی جائے گی. صحیح. اور صبح 9 سے شام 5 بجے تک اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ رات کے وقت کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے, یقیناً آپ ہمیں کال کریں. ہمارے سسٹم پہ IVR سسٹم پہ آپ کی کال ریکارڈ ہو جاتی ہے, آپ کا نمبر آ جاتا ہے ہمارے پاس. ایون کہ آپ پوری بات بھی نہیں کرتے, جسٹ آپ کہتے ہیں کال کرتے ہیں کہ صبح مجھے کال کی جائے, تو ہمارے پاس وہ آپ کی کال لسٹ میں آ جاتی ہے. ہمارے وکیل جیسے ہی صبح آتے ہیں سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ رات کو آئی گئی کالز ہم وکیلوں کو واپس دیتے ہیں کہ آپ ان کو کال بیک کریں. اوکے. تو وہ واپس ان نمبرز پہ کال بیک کرتے ہیں. رات کے ٹائم پہ کوئی اویلیبل نہیں ہوتا لیکن آپ کی کال ریکارڈ ہو جاتی ہے. کال ریکارڈ ہو جاتی ہے. اور ایک بندہ تو نہیں, ڈیجیٹل وکیل ہمارا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ناز اسسٹ چیٹ باٹ ہے ہمارا. پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا لیگل چیٹ باٹ ہے جو ملٹی لنگول ہے, مطلب مختلف زبانوں میں آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. صحیح. فرض کریں کہ ہمارا دفتر بند ہے, آپ کی کال آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے فوری کے فوری ابھی پتہ کرنا ہے کہ مسئلے کا حل کیا ہے, تو آپ ہمارے لیگل ایڈ سوسائٹی کے پیج پہ جائیں گے, ویب سائٹ پہ, فوراً آپ کو ناز اسسٹ ایک ہمارا جو ڈیجیٹل چیٹ باٹ ہے وہ اپیئر ہوگا. وہ آپ سے السلام علیکم, میں آپ کی کیسے مدد کروں, وہ آپ زبان بتائیں آپ کون سی زبان میں بات کرنا پسند کریں گی یا کریں گے. وہ بتائے گا کہ میں پشتو میں, اردو میں, سندھی میں, انگلش میں بات کر سکتا ہوں. آپ اپنی مطلوبہ زبان لکھیں, آپ اس کو سوال کریں, وہ فوراً آپ کو پاکستان کے کانٹیکس میں پاکستان کے لاز کے انڈر آپ کو کال وہ مسئلے کا حل بتائے گا. اوکے. ٹھیک ہے, مسئلے کا حل بتائے گا. فردر وہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ چاہتے ہیں, اگر ابھی آپ مطمئن ہیں ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کہتے ہیں تو میں صبح وکیل سے آپ کی بات کرا دوں. ٹھیک ہے, تو وہ انٹیگریٹڈ سسٹم ہے ہمارا. صحیح. تو سروس کہہ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے اویلیبل ہے. زبردست زبردست. اچھا, اگر کوئی لیگل طریقے سے کام کروانا چاہ رہا ہے, آگے اپنے کیس کو بڑھانا چاہ رہا ہے اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور بالکل افورڈیبل بھی نہیں ہے کہ بھائی میں فیس تو بالکل بھی نہیں دے سکتی یا دے سکتا, تو پھر اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں دیکھیں, کافی سارے میٹرز تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, ہم خود بھی حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے ادارے کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی سمپل میٹرز ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارے وکیل آپ کو آگاہ کرتے ہیں, فوراً وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ والی اپلیکیشن لکھیں, فلاں مجسٹریٹ کے پاس جا کے جمع کرا دیں, اس کے بعد جی یہ جواب ملا ہے, اس کے بعد جی اب آپ نیکسٹ یہ سٹیپ لے لیں. تو کئی دفعہ جو چھوٹے چھوٹے میٹرز ہیں آپ کے,
روٹین کے, ان میں کئی دفعہ وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی, تو ہمارے وکیل ہی کافی ہوتے ہیں, وہ آپ کو ڈائریکشنس دے رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ اس طرح سے پرسیو کریں آگے. ٹھیک ہے, کوئی بڑے میٹرس ہیں جن میں آپ فیس افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ہمارے ادارے کو بتاتے ہیں. تو خواتین کے لیے, غریب لوگوں کے لیے تو ہماری خاص طور پہ سروس ہوتی ہے کہ ہمارا ایک پورا وہ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ اگر اس پہ پورا اترتے ہیں تو ہم پھر جو ہے وہ ان کا کیس جو ہے وہ ریفر کر دیتے ہیں اپنے دوسرے پروگرامز کے وکیلوں کے پاس, لیگل ایڈ سوسائٹی کے پاس, کہ اس خاتون کا جو ہے وہ کیس دیکھیں. لیکن اس کے لیے تھوڑا کرائٹیریا ہے کیونکہ سندھ بیسڈ انیشیٹو ہے تو وہ سندھ سے کلائنٹ ہونا ضروری ہے. لیکن باقی پاکستان کے عوام بالکل مایوس نہ ہو کہ ہمارے لیے سندھ گورنمنٹ کا, تو آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم آپ کو پراپر ایڈوائس کر سکتے ہیں. صحیح. تو آپ کا کیس چل رہا ہے یا آگے چلانا چاہ رہے ہیں یا شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی میٹر ہے, تو آپ کسی بھی سٹیج پہ آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں. اچھا یہ ضرور بتائیے کہ جو ہماری بہنیں کال کر رہی ہیں تو قانونی مدد ان کے لیے کس طرح ثابت ہو رہی ہے, کیا وہ سیٹسفائی ہیں اس چیز سے؟ بالکل کرن, دل خوش ہو جاتا ہے. میں اسی لیے جو ہے نا یہ لے کے آئی تھی سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر کی بائی اینول رپورٹ نا. تو یہ رپورٹ ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہوگی, اور اس رپورٹ میں کچھ سٹوریز وغیرہ ہم لوگ دیتے ہوتے ہیں کہ پچھلے 6 مہینوں میں جو ہے کیا پروگریس رہی ہے, کتنے لوگوں نے کال کی, کتنے لوگوں کو ایڈوائس ملی, لوگوں کے کیا تاثرات ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو سروے کر کے باقاعدہ پوچھتے ہیں, ہمارا اینول فیڈ بیک سروے ہوتا ہے, تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کتنے خوش ہیں. ابھی آپ اس میں کچھ سٹوریز وغیرہ چیدہ ہم کچھ ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں کیس ہوتے ہیں, ساری ہم اس میں انکلوڈ نہیں کر سکتے, تو لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے. جو روبوٹ آپ بتا رہی تھی وہ یہ ہے؟ یس, وہ یہ دکھا سکتی ہیں آپ. بالکل, یہ ڈیجیٹل وکیل ہمارا جو ہے ناز اسسٹ, یہ پاکستان کا فخر ہے, پاکستان کا پہلا لیگل چیٹ باٹ ہے. بلکہ اس کا آپ لوگ پوری دنیا کو فخر کے ساتھ بتائیں کہ یہ پاکستان گورنمنٹ کا ہمارا انیشیٹو ہے, لیگل ایڈ سوسائٹی سندھ گورنمنٹ کا, کہ ہم نے ایک ملٹی لینگول مختلف زبانوں میں ایک لیگل چیٹ باٹ متعارف کرایا ہے جو آپ کو کسی بھی زبان میں جو ہے وکیل. اور یہ کچھ فگرز ہیں, کیٹیگریز ہیں جو بالکل. تو اس میں لائک کچھ کرن, جیسے اس میں کچھ سٹوریز ہیں کہ ایک کلائنٹ ہے, خاتون ہے, اس نے اپنا ایک لائک قسطوں پہ ہم جیسے یہاں پہ لے لیتے ہیں, فلیٹ بک کرا لیا, پیسے دیتے رہے اور اینڈ ٹائم پہ جو ہے وہ آپ کو جو مین وہ جو تھا کانٹریکٹر تھا یا جو بھی تھا وہ آپ کو پوزیشن ہی نہیں دے رہا. صحیح. اس طرح کے ہمیں ڈے ٹو ڈے کے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں, تو اس طرح کے کیسز بھی ہم نے ہینڈل کیے ہیں. مالک مکان نے بلا وجہ سختی کر لی یا کرایہ دار نے مکان پہ قبضہ کر لیا, مطلب یہ آ رہا ہے تشدد بڑے سے, تشدد, ظلم, زیادتی, کوئی بھی چیز ہے تو آپ ہمیں کال کریں. تو آپ کا دیکھنے میں مسئلہ چھوٹا ہوتا ہے کہ یار ہو جائے گا سالو, لیکن ذہنی پریشانی جو جس کی وجہ سے ہم تنگ ہوتے ہیں, کئی دفعہ اوور بل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے کیسے نپٹنا ہے. کئی دفعہ آپ ریٹائرڈ ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ کو ڈیوز ٹائم پہ نہیں مل رہے ہوتے, آپ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ آپ کیس کسی ادارے میں لے کے جاتے ہیں, کسی بھی مطلوبہ سرکاری دفتر میں, اور خدا نخواستہ وہاں پہ آپ سے رشوت طلب کی جاتی ہے. اس کے لیے بھی کمپلین کر سکتے ہیں؟ یس آف کورس, اس کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, بیکاز سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر ہے, گورنمنٹ آف سندھ کا انیشیٹو ہے. تو سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر, جو آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے میں بتاؤں کہ ہمارے سندھ گورنمنٹ میں یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے کرن, کہ اگر کوئی سرکاری ادارہ صحیح پرفارم نہیں کر رہا, اس سے آپ کو کوئی شکایت ہے, تو پورا ایک یہاں پہ پرفارمنس مینجمنٹ سیل ہے سندھ سیکریٹریٹ میں. ٹھیک ہے, وہ چاہے کوئی بھی انتظامی ادارہ ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کو اس سے شکایت ہے, آپ فوراً وہ ہمیں فون کریں, ہمارا ان کے ساتھ انٹیگریشن ہے, آپ کی اپلیکیشن ہم یہاں سے وہاں پہ فوراً بھیجتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتی ہوں, لائک کشمور کے کسی گاؤں سے ایک ماں کال کرتی ہے, غریب خاتون, کہ جی میرے گاؤں میں پرائمری اسکول ہے لیکن ٹیچر اسکول آتی ہی نہیں ہے, گھر بیٹھ کے تنخواہ لے رہی ہے. صحیح. میں کیا کروں, بچے سارا دن کھیل کے آ جاتے ہیں, میں پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں, میرے اتنے ریسورسز بھی نہیں ہیں, میں اپنی آواز کہاں تک پہنچاؤں. تو اس خاتون کی اس کال میں اتنی پاور ہے کہ اس کی کمپلین ہم پھر یہاں سے فوراً SPMS ٹیم کو بھیجتے ہیں, سندھ پرفارمنس مینجمنٹ سیل جو ہمارا ہے. ٹھیک ہے,
यहाँ से सिंध सेक्रेटेरिएट से मतलूबा डिपार्टमेंट को लेटर निकलते हैं और मतलूबा डिपार्टमेंट उस स्कूल तक आउटरीच करता है। अच्छा, और इस तरह की स्टोरीज हमारे पास हैं। इस सारे मैटर में टाइम कितना लगता है, मतलब कि अगर एक कॉल गई फिर लेटर निकला फिर प्रोसेस होगा, तो मुझे सुनने में तो ये प्रोसीजर बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन टाइम टेकिंग है या फौरन सारी चीजें होती हैं? देखिए किरण, जो चीज़ है आप फौरन कॉल करते हैं, फ्री लीगल एडवाइस तो उसी वक्त आपको मिल गई, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट के इंतज़ामी, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें पता है, ठीक है। इसको बिल्कुल मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं आपको मायूस करना चाहूँ, हमारे पास ऐसी भी मिसालें हैं कि फौरन केस हल हो गया, सही, और ऐसी भी मिसालें हैं जहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। तो ये केस की सिचुएशन पे वेरी करता है, ठीक है, कि मैटर किस इदारे से है, तो यहाँ से जो है वो हम फॉलो अप कर रहे होते हैं। तो मज़ीद डिटेल आप देख लीजिएगा, तो बिल्कुल इस सिलसिले में मायूस ना हो, लेकिन ये है कि एट द एंड होता जो है वो बेहतर होता है। और आपको मैं ये भी बताऊं कि जो यहाँ पे मतलूबा सेक्रेटरी साहब होते हैं आईएनसी डिपार्टमेंट के, या लॉ सेक्रेटरी साहब हैं, उनके साथ हमारी बाकायदा मीटिंग्स होती हैं, या लॉ मिनिस्टर साहब हैं, तो उन सब का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, कि वो लोग भी इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, और अगर कहीं पे कोई चैलेंज आ रहा होता है तो वो फ़ौरन उसको रिजॉल्व करते हैं। सही। ख़ास तौर पे हमारे अली अहमद बलोच साहब जो लॉ सेक्रेटरी साहब हैं, मैं कहती हूँ कि इतना पैशनेट बंदा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा जो लोगों की दिन रात सर्विस के लिए बैठे हुए हैं। और मुझे कभी नहीं ज़िंदगी में याद कि जितनी भले मर्जी मसरूफियत सर की और मैं सर को टेक्स्ट करूं या मैसेज करूं या मैं जाऊं कि सर सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर से फलां काम के लिए आना है, तो सर कहते हैं मोस्ट वेलकम, आ जाएं, बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं। सही। एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसका जवाब दे दे, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। इस इंसाफ के एक तराजू को हम मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं? हम मज़ीद उस वक्त बेहतर कर सकते हैं जब हम सब के अंदर हिम्मत होगी, बहादुरी होगी और पैशन होगा इंसाफ का, कि इंसाफ हमारा हक है, इंसाफ हमें मिलना चाहिए। इंसाफ लेने वाले ही जब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इंसाफ खुद तो नहीं चल के आएगा ना। तो इदारे मौजूद हैं, आप लोग इंसाफ के लिए उठें, और ये नंबर जो है वो सबको बताएं। ये कोई खुदा न खास्ता ये शैम्पू, तेल, साबुन या कोई इस तरह की कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको हम सेल करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए बैठे हैं। ये एक तहरीक है, एक समझ लें, हमारे मुल्क की खुशहाली का रास्ता उस वक्त वहाँ से निकलता है जहाँ से इंसाफ है। ज़बरदस्त। और इंसाफ हासिल करने के लिए आप, मैं ज़ाती एफर्ट्स करें। आज मैं क्यों बैठी हुई हूँ, ऑफिस टाइम तो 5 बजे तक है, मैं 7:30 बजे तक प्रोग्राम्स में बैठी हुई हूँ। तो किरण, इसकी वजह यही है कि हमारा जो अंदर का पैशन है, जिस तरह से मैं मिसाल दे रही थी अपनी टीम की, जस्टिस साहब की, जस्टिस साहब तो रिटायर्ड हो चुके हैं ना, अभी तक क्यों ये इदारा चला रहे हैं? सही बात है। सिर्फ वजह यह है कि मुल्क तब खुशहाल होगा जब हम सबको इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ तब मिलेगा जब हमें पता होगा कि इंसाफ मिलता कैसे है। थैंक यू सो मच रुखसाना, बहुत अच्छा लगा आज आपसे दोबारा बातें करके। और कोई लास्ट में मैसेज देना चाहेंगी आप? लास्ट मैसेज मेरा यही है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें फ़ख्र है अपने पाकिस्तान पर। और हम सूबा सिंध में रहते हैं, तो सिंध का सूबा जो है माशाल्लाह मोहब्बतों वाला सूबा है। सूफ़ी शायर यहाँ पे रहते हैं, मोहब्बतों वाला, मोहब्बतें बांटने वाला सूबा है। तो इंसाफ बांटने वालों में भी हम लोग शामिल हो गए हैं इंशाल्लाह। इस नंबर को मज़ीद जितना फैला सकते हैं आप लोग फैलाएं, ताकि पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है इस नंबर से मुस्तफ़ीद हो सके। क्योंकि ये सिंध टीवी पे हम लोग बैठे हुए और ज़्यादा सिंधी आवाम देख रही है, तो अपने दोस्तों को जो है KTN पे बैठे हुए हैं, हम कराची टीवी पे, तो प्लीज़ जी इस नंबर को आगे फैलाएं आप। चलें, थैंक यू। जी हाँ, त 0800-708006 सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हांखे काई बि परेशानी आहे त तव्हां हिन नंबर ते कॉल करे सघो था। ऐं हींअर ब्रेक जो वक़्तु थियो आहे, ब्रेक खां पोइ असांखे ॿिया जेके आहिनि गेस्ट जॉइन कंदा, सो कारे न वञिजो, जल्दी हाज़िर था थियूं।
ॿीहर तव्हांखे भलीकार कंदासीं रंगन भरी शाम में। ऐं हींअर असांखे जिन गेस्ट जॉइन कयो आहे मां तव्हांखे उन्हनि जे हवाले सां ॿुधाइणु चाहींदसि। डॉक्टर अब्दुल जब्बार ॾाहिरी असां सां गॾु हिते स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेके असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन आहिनि। उनखां अलावा तौफ़ीक़ अब्बास असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि, जेकी शागिर्द आहिनि उस्ताद ग़ुलाम शबीर समू साहब जा, ऐं पाण सिंगर भी आहिनि ऐं कंपोज़र भी आहिनि। ॿिन्हिनि खे भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं आहियो सर? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हां ख़ुशि आहियो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाउ। वालेकुम सलाम, खुश है। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? तबियत सही आहे? फर्स्ट क्लास आहे दऊं मोला करम। अच्छा सर, जीअं त अॼुकल्ह पेपर हली रहिया आहिनि ऐं उन जे हवाले सां ॿुधायो, किथे थी विया, किथे थियनि पिया था। चीटिंग भी सरेआम आहे, मतिलबु नज़र अचे थी। किथे त सख़्ती भी आहे, किथे हथ वठी कराइनि पिया था। त इहो कॉपी कल्चर ऐं चीटिंग वारो इहो हिसाब किताब आख़िर ख़तमु कॾहिं थींदो? सभ खां पहिरियों महिरबानी त तव्हां ॿ लफ़्ज़ इस्तेमालु कया। इन में हिकिड़ो चीटिंग, ॿियो नक़ल कराइणु। मुंहिंजी नज़र में चीटिंग अलॻि शइ आहे ऐं नक़ल करणु ऐं नक़ल कराइण ॿी शइ आहे। चीटिंग उहा आहे त जंहिंमें माण्हू इन्विजिलेटर खे धोखो ॾिए ऐं लिकी सिकी कुझु लिखण जी कोशिशि करे, चाहे कागज़ तां, कंहिंजी कापी खां, मोबाइल खां, कंहिंखां। असांजी जेका सिंध आहे न, उन में चीटिंग जो रुझान बि आहे, को इनकार कोन्हे। उन सां गॾोगॾु नक़ल जो बि रुझान आहे ऐं उहो नक़ल जो रुझान काफ़ी हद ताईं माण्हुनि जे इल्म में बि आहे। हाणे तव्हां इहा ॻाल्हि कई त इहो ख़तमु कीअं थिए। नक़ल ख़तमु करण लाइ सभ खां पहिरियां जेको शागिर्द आहे, जंहिंखे पढ़णो आहे, जंहिंखे मार्कूं वठणियूं आहिनि ऐं जंहिंखे मुस्तक़बिल में इल्म खे इस्तेमालु करिणो आहे, हिकिड़ो शागिर्द पाण, उन खां वधीक अहम किरदारु आहे वालिदेन जो। हाणे असांजो जेके वालिदेन आहिनि उहे चाहिनि था त असांजा ॿार भली ग़लति तरीक़ो इख़्तियार करे सुठा पेपर कनि ऐं मार्कूं घणियूं खणनि ऐं अॻिते पढ़नि। उन सां गॾोगॾु जेको इन्विजिलेटर आहे, जेको क्लास रूम में मौजूदु हूंदो आहे, उन जो बि वॾो किरदारु आहे त हू नक़ल खे रोके सघे थो। ऐं तव्हां कराची में ॾाढा ख़राबु मिसाल हिन साल थिया आहिनि त हिकिड़े प्रोफेसर खे सीने ते वञी रिवाल्वर रखियो वियो, ॿिए प्रोफेसर खे धमकियूं ॾिनियूं वियूं, जंहिंजी मां सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़मत कयां थो। ऐं हुकूमत खां असां इहा घुर बि कयूं था त जेको असांजो स्टाफ आहे उन खे इम्तिहान में तहफ़ुज़ जेको आहे फ़राहम कयो वञे। हाणे इहो जेको कमु आहे बुनियादी तौर ते ख़तमु तॾहिं थींदो जॾहिं जेके स्टेक होल्डर्स आहिनि, शागिर्द, वालिदेन ऐं उहे जेके इम्तिहान कंडक्ट कराइनि था, उन सां गॾोगॾु बोर्ड बि। छाकाणि असां वटि जेके बोर्डनि जूं कहाणियूं मंज़र आम ते अचनि थियूं, अख़बार जी ज़ीनत बणिजनि थियूं, उहे बि तमामु वॾा सवाल छॾनि थियूं। यानी तव्हांजे सवाल जो सादो जवाबु इहो आहे, जॾहिं इहे सभई स्टेक होल्डर हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते ईंदा ऐं इहो सोचींदा त मार्कूं उहे ई आहिनि जेके शागिर्द पढ़ी महिनत सां खणे थो, मार्कूं उहे कोन्हनि जेके चीटिंग ज़रिए थियनि, जेके नक़ल ज़रिए थियनि या कंहिं ॿिए ज़रिए सां ख़रीद कई वञे। इहो सही ॻाल्हि आहे त जेके पढ़ण वारा स्टूडेंट्स आहिनि उहे पढ़नि बि था, पंहिंजी ॿियनि एक्टिविटीज़ में बि आहिनि, फैमिली सां गॾु आउटिंग बि कनि था, पढ़नि बि था, मार्क्स बि आणनि था सुठा। कुझु ॿार वरी अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके रुॻो मोबाइल ते पंहिंजो वक़्तु ज़ाया कंदा आहिनि ऐं जॾहिं इम्तिहान मथे ते हूंदा आहिनि त पोइ अची उन्हनि खे टेंशन थींदी आहे। सॼो साल न पढ़ंदा, पोइ जेको हिकिड़ो हफ़्तो रहिजी वेंदो उन में अची उन्हनि खे टेंशन थींदी त हाणे पेपर आहिनि, पेपर आहिनि, पेपर आहिनि। पोइ या त कंबाइन स्टडीज़ कंदा, या त वरी ट्यूटर ॻोल्हींदा, या त वरी पाण वेही पढ़ंदा। सो इहो बि ग़लति आहे। जॾहिं तव्हांखे ख़बर आहे त भई मां पढ़ंदसि त अॻिते वधंदसि, त इन खां बहितर आहे त असां मोबाइल ते टाइम ज़ाया कयूं। मोबाइल बि हिकिड़ी जेका असांजे हथ में हिकिड़ो डिवाइस आहे, उहा बि असांजे पंहिंजे फ़ाइदे जे लाइ बि आहे। ईअं न आहे त रुॻो नुक़सानु आहे उनजो, फ़ाइदो बि वठिजे उनजो, रुॻो मिसयूज़ न कजे उनखे। उन मां तव्हां
पढ़ाई बि करे सघो था, उन मां तव्हां पंहिंजा पेपर्स बि तयारु करे सघो था, पंहिंजी इलाही शयूं आहिनि जेके तव्हां उन मां रेडी करे सघो था। पर असां वटि ट्रेंड इहो आहे त असांखे रुॻो मोबाइल खे मिसयूज़ करिणो आहे, असांखे उन मां फ़ाइदो हासिलु नाहे करिणो। ॿी ॻाल्हि हिते मूंखे यादि हाणे आई, जो 2-3 ॾींहं पहिरियां सोशल मीडिया ते हिकिड़ी पिक्चर मां ॾिठी, ॾाढी वायरल पई थी। तव्हांखे यादि आहे त पुराणा जेके फ़ोन्स हूंदा हुआ, जेके कीपैड वारा फ़ोन्स हूंदा हुआ, ॾाढा शौक़ सां उन ज़माने में बि असां यूज़ कंदा हुआसीं। उन में पिक्चर त न ईंदी पर वॉइस क्वालिटी ॾाढी सुठी हूंदी, टेक्स्ट मैसेजिस करे सघंदा हुआसीं। त यूरोप में स्टूडेंट्स जेके बि आहिनि उन्हनि सोशल मीडिया खे ऐं स्मार्ट फ़ोन्स खे बाइकॉट कयो आहे, ऐं सिर्फ़ु इन वजह सां त हुननि जी पढ़ाई में हर्ज पियो थिए। ऐं हुननि ॿारनि जेको आहे पंहिंजे पेरेंट्स खे पाण हिन में कॉन्फिडेंस में वठी करे पंहिंजा स्मार्ट फ़ोन्स सेल आउट कया अथनि, कंपनीज़ खे वापसि कया अथनि, ऐं हुननि वञी करे उहे नंढा फ़ोन्स जेके आहिनि कीपैड वारा उहे वरिता अथनि ऐं उन्हनि फ़ोन्स खे यूज़ कनि था। छो त उन में न तव्हांजो सोशल मीडिया हली थो सघे, न उन में का ॿी शइ हली थी सघे, जस्ट तव्हां उनखे हिकिड़ो कॉल जे ज़रिए यानी इंफॉर्म करण लाइ यूज़ करे सघो था, ऐं पंहिंजी टेक्स्ट मैसेजिस जे ज़रिए ख़ैरियत ॾेई सघो था, या कोई कमकार आहे त तव्हां टेक्स्ट मैसेज उन ते करे सघो था। त इहो हिकिड़ो स्टेप वरितो वियो आहे। त इहा जेका शइ मूंखे ॾाढी सुठी बि लॻी, ॾाढी हैरानी बि थी त अॼु जे दौर में बि मतिलबु यूरोप जहिड़ो एडवांस मुल्क इहा शइ करे थो, त असां जेके इलाही पोइते आहियूं, अञा AI जो दौरु आहे, अॼु असां इलाही पोइते आहियूं, इलाही पोइते आहियूं, पर असां इहे इनिशिएटिव छो था वठी सघूं? तव्हां जेका ॻाल्हि कई त शागिर्दनि मोबाइल वापसि करे छॾिया, कीपैड जा वरिता। हाणे असांजो जेको मुआशिरो आहे उन मुआशिरे में जेको हिन महिल सोशल मीडिया जे करे फहाशी आम तबाही थी वई आहे। सोशल मीडिया जे करे मां त चवां थी तबाही थी वई आहे, का मतिलबु नवाण कोन आई आहे, रुॻो तबाही थी आहे। मां इहा ई ॻाल्हि करण थो ॾिसो न, मां पहिरियों ई लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो फहाशी। ॾाढो ॾुख थो थिए जेॾीमहिल तव्हां सोशल मीडिया, मां फेसबुक यूज़र आहियां, ॿी का शइ मां यूज़ तक़रीबन कोन कंदो आहियां, यूट्यूब वग़ैरह बि यूज़ न कंदो आहियां। फेसबुक तव्हां जेॾीमहिल फेसबुक खे खोलियो, अहिड़े क़िस्म जूं वीडियोज़ मायूं मर्द या मायूं मर्द गॾियल, मां नालो नथो वठां, अॼुकल्ह हिकिड़ो छोकिरी ऐं जवान आहे जेको थोरो मशहूरु बि आहे सिंध में, अहिड़ियूं बेहयाई वारियूं वीडियोज़ पिया था रखनि, ऐं उन खां सवाइ मायूं अकेलियूं बि अहिड़ियूं बेहयाई वीडियोज़ रखनि थियूं, जॾहिं उन्हनि खे ॾिसिजे थो त न सिर्फ़ु शर्म थो अचे, पर उन सां गॾु इहो सोचिजे थो त असांजे नौजवान जो छा थींदो। असांजी उमिरि 50 खां मथे आहे, जेको नौजवान आहे जंहिंजी 18 साल उमिरि आहे, 20 साल उमिरि आहे, उन लाइ त इहा शइ वॾी अट्रैक्शन वारी आहे। त उन जे इख़लाक़ ते, उन जे किरदार ते, ऐं उन जे ईमान ते, ऐं उन जे मुस्तक़बिल जो केॾो ख़राबु असरु पवंदो जॾहिं हू अहिड़ियुनि शयुनि जी तरफ़ मुतवजह थींदो त हू सेक्सुअल क्राइम जी तरफ़ वेंदो, त हू उन जे तरफ़, छाकाणि जॾहिं तव्हां सेक्सुअल क्राइम तरफ़ ईंदव त माना तव्हांखे ॾोकड़ खपे, जॾहिं तव्हां ॾोकड़ न हूंदो त तव्हां ॿिए जनरल क्राइम जी तरफ़ वेंदव। त बिल्कुलु असांजे पेरेंट्स आहियूं न, हाणे हिते असांजी ज़िमेदारी आहे, बिल्कुलु असां पंहिंजे औलाद खे इन शइ खां महदूद कयूं। हाणे उन में बि वरी असांजो ॾोह ई आहे, जॾहिं असां पाण यूज़र आहियूं त असां औलाद खे कीअं झलींदासूं। माना हाणे हिते हल मूंखे नज़र इहो थो अचे त असां पंहिंजे नफ़्स ते बि कंट्रोल कयूं ऐं पंहिंजे औलाद ते बि कंट्रोल कयूं, ऐं उन्हनि खे अहिड़ियुनि बीमारियुनि खां, मुआशिरती बीमारियुनि खां बचायूं, ऐं उन्हनि जी इख़लाक़ ऐं किरदार जी अहिड़ी तरबियत कयूं त हू जेको आहे ॻाटो मथे करे हली सघनि ऐं बुरे ऐं भले में तमीज़ करे सघनि। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे।
सर कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? तबियत सही आहे तव्हांजी? जे तव्हां बि माशाल्लाह सिंगर आहियो, सोशल मीडिया जो दौरु आहे ऐं सोशल मीडिया जी ही ॻाल्हि थी रही आहे, त तव्हांखे छा थो लॻे त सोशल मीडिया जेको आहे केतिरो ज़रूरी थी वियो आहे अॼुकल्ह मतिलबु सिंगर्स जे लाइ? सोशल मीडिया में फ़ाइदा बि आहिनि त नुक़सान तमामु ॿियनि था घणा थी विया आहिनि, थी चुका आहिनि। असांजो ऑडियो दौरु हूंदो जॾहिं हूंदो न त कॉम्पिटिशन जो दौरु हूंदो, महिनत जो दौरु हूंदो। हाणे सोशल मीडिया थी पई आहे, हुन में छड़ो ॾिसी करे न को सिखे थो कोई शागिर्द। ट्यूनर सिस्टम थी पिया आहिनि, कंप्यूटर सिस्टम थी पियो आहे, सम्झ में ॻाल्हि कोन थी अचे, वधि आहे सोशल मीडिया तबाही आंदी आहे। तव्हां पाण बि कंपोज़र आहियो माशाल्लाह सां, तव्हांजो पंहिंजो स्टूडियो आहे? जी जी स्टूडियो आहे। त हाणे ॿिया जेके बि असांजा भाइर आहिनि जिन जा स्टूडियोज़ आहिनि, जेके कंपोज़र आहिनि, नाराज़ न थियनि हिन ॻाल्हि ते, पर मुंहिंजे ख़्याल सां अगरि कोई नओं सिंगर अचे थो त असांजा जेके कंपोज़र्स आहिनि उहे पाण बि इहा शइ कनि था त ट्यूनर व्यूनर हणी हुनखे सेट करे ॾेई था छॾनि। कंपोज़र कनि था न, मतिलबु इहो रिकॉर्डिस्ट आहे, हा, उहो बि करे थो पियो। मतिलबु उहो उनखे एतिरो चवणु घुरिजे त भाई तूं सिखिया वठी अचु। असली अर्ज़ु कया न त हाणे उहो रेशो घटि आहे, सिखण वारो रेशो घटि थी चुको आहे पंहिंजी सिंध में बेसिकली तौर ते। त इहा त पोइ पंहिंजे कम सां नाइंसाफ़ी आहे न, यानी मतिलबु पंहिंजे कम सां असां गद्दारी था कयूं। गद्दारी हिन में शक ई न आहे। यानी अॻे कमु कबो हुयो, गानो रिकॉर्ड थींदो हुयो, हुन में महिनत लॻंदी। हालांकि मुंहिंजो कमु न आहे सिंगिंग, पर ज़ाहिर आहे असां हिन ई फील्ड में रहूं था त असां ॾिठो आहे, असां उन्हनि सिंगर्स खे बि ॾिठो आहे, उन्हनि कंपोज़र्स खे बि ॾिठो आहे जो सॼो सॼो वक़्तु हो पंहिंजे स्टूडियोज़ में गुज़ारींदा हुआ, सॼी सॼी राति हो पंहिंजे स्टूडियोज़ में गुज़ारींदा हुआ। ख़बर पवंदी त राति खां रिकॉर्डिंग पई थी हले। हाणे त फास्ट एंड फॉरवर्ड वारो जेको आहे हिकिड़ो टाइम थी वियो आहे, 2 कलाकनि में रिकॉर्डिंग ख़तमु, पैकअप बि थी वई। उन टाइम दादी छा थींदो, मां 2001 जी ॻाल्हि कयां थो पियो। असांखां त पहिरियों उस्ताद वॾे वारा गुलाम शरीफ़ साहिब वारा, शमन मियाली साहिब वारा, माण्हू साहिब वारा हुया। 2001 खां वठी 2007 ताईं असांजो इहो वक़्तु हूंदो त 8 ॾियारा असां परहेज़ कंदा हुआसीं, माना न को नशो कंदा हुआसीं, न अहिड़ी का सणबी शइ खाईंदा हुआसीं, न थधो पाणी पीअंदा हुआसीं। 8-8 10 ॾींहं उहा धुनूं पचाईंदा हुआसीं, जेको उस्ताद कंपोज़ करे ॾींदा हुआ। एॾी महिनत कंदा हुआसीं। हाणे चवंदा कलाक ॿिनि में कमु थिए थो पियो, पर जेका जंहिंजो बुनियादु आहे, बुनियादी शइ त बुनियादी आहे। बिल्कुलु, हा, बसि अलाह हिदायत ॾे सभिनीनि खे। हींअर छा पिया ॿुधायो असांखे? हींअर मुंहिंजे उस्ताद जो गीत आहे जी, सो जेका पेश ख़िदमत आहे साईं। ईअं मूंखे विसार वेठो ॼण हुन जो कुझु बि न आहियां, धारियो आहियां ओ ज़ाहिद मीराणी बेक़दुरे जा कहिड़ा सूर ॿुधायां, धारियो आहियां। रुअंदो हुयो मुंहिंजे लाइ जो नए सजण खे मां यादि बि न आहियां। रुअंदो हुयो मुंहिंजे लाइ जो नए सजण खे मां यादि बि न आहियां। शायदि सजण खां मां विसरी वियो आहियां, ओ शायदि पीरीअ खां मां विसरी वियो आहियां। रोअंदो हुयो मुंहिंजे लाइ जो नए सजण खे मां यादि बि न आहियां। शायदि सजण खां मां विसरी वियो आहियां, ओ शायदि पीरीअ खां मां विसरी वियो आहियां। सुख में मूंसां हूंदो गॾु हो प्यारो,
सॾींदो हुयो मुझे ॾींदो सॾु हो प्यारो दुख सुख में मूंसां हूंदो गॾु हो प्यारो सॾींदो हुयो मुझे ॾींदो सॾु हो प्यारो सॾींदो हुयो मुझे ॾींदो सॾु हो प्यारो रोअंदो हुयो मुझे लाइ जो नय सजण खे मां यादि बिना आहियां रोअंदो हुयो मुझे लाइ जो उनय सजण खे मां यादि बिना आहियां हो शायदि सजण खां मां विसरी वियो आहियां ओ शायदि पिरीअ खां मां विसरी वियो आहियां कटे वियो अलाए कीअं मूं सां खिलो खिलो अञा ताईं हैरत में गा मुंहिंजी दिलि कटे वियो अलाए कीअं मूं सां खिलो खिलो अञा ताईं हैरत में गा मुंहिंजी दिलि अञा ताईं हैरत में मुंहिंजी दिलि रोअंदो हुयो मुझे लाइ जो नय सजण खे मां यादि बिना आहियां रोअंदो हुयो मुझे लाइ जो नय सजण खे मां यादि बिना आहियां हो शायदि सजण खां मां विसरी वियो आहियां ओ शायदि पिरीअ खां मां विसरी वियो आहियां हुजे साम्हूं हुन खां पुछां छो रुठो आं पंहिंजे फ्याज़ सां छो नाराज़ थियो आं हुजे साम्हूं हुन खां पुछां छो रुठो आं पंहिंजे फ्याज़ सां छो नाराज़ थियो आं पंहिंजे फ्याज़ सां छो नाराज़ थियो आं रोअंदो हुयो मुझे लाइ जो नय सजण खे मां यादि बिना आहियां रोअंदो हुयो मुझे लाइ जो नय सजण खे मां यादि बिना आहियां ओ शायदि सजण खां मां विसरी वियो आहियां हो शायदि पिरीअ खां मां विसरी वियो आहियां ओ शायदि पिरीअ खां मां विसरी वियो आहियां हो शायदि सजण खां मां विसरी वियो आहियां वाह 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 बेहतरीन वाह, ज़बरदस्त। ही सैड सॉन्ग थोड़ो रीमिक्स सॉन्ग थी वियो न्यू म्यूज़िक सां जेको आहे न इनायत भा ज़बरदस्त फास्ट म्यूज़िक में तव्हां सैड सॉन्ग ॾिनो आहे थोड़ो डिफरेंट टच आयो आहे हिन में मज़ो आयो सो हिते ब्रेक जो बि वक़्तु थियो आहे काॾे न वञिजो जल्दी हाज़िर था थियूं वेलकम बैक व्यूअर्स ॿीहर तव्हांखे भलीकार कंदासीं तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था असांखे कॉल करे सघो था मूंखे ख़बर पई आहे
त टेलीफोन लाइन सही थी वई आहे त तव्हां बि जल्दी जल्दी सां पंहिंजा मोबाइल्स खणो ऐं असांखे कॉल करणु स्टार्ट कयो. अच्छा, तव्हां खां मां हिकिड़ी ॻाल्हि इहा पुछणु चाहींदमि त हींअर कुझु नवां ट्रैक्स तव्हांजा ठहनि था? जी जी बिल्कुलु. अच्छा, जी. त मतिलबु ईद ते कुझु रिलीज़ आहिनि? जी जी बिल्कुलु. त हींअर बि एल्बम्स ई कयो था या पंहिंजे यूट्यूब चैनल लाइ या कुझु KTN जे लाइ बि ठाहियो अथव? इदारे लाइ कोन ठाहियो आहे, पर इहो SR में मां कमु कयां पियो. चैनल त मुंहिंजो पंहिंजो बि आहे, कंपनी मुंहिंजी पंहिंजी बि आहे, पर हिन महिल SR में कमु कयां पियो. अच्छा जी जी, शायदि रोज़ सां वटि. सही सही. जी जी. त मतिलबु नवां गाना तव्हांजा ॿुधी सघूं था ईद जी ते जी असां? बिल्कुलु बिल्कुलु. हलो ज़बरदस्त. सर, लर्निंग जेको प्रोसेस आहे उहो इंसान जो मतिलबु पैदा थियण खां शुरू थींदो आहे, मरण घड़ी ताईं हलंदो आहे. त जेतिरो लर्न कजे ओतिरो घटि आहे, पर हींअर तव्हांखे छा थो लॻे त ॿारनि में केतिरो पोटेंशियल आहे लर्निंग जो? तव्हां पाण ई चयो त लर्निंग, आमोज़िश, सिख्या इहो मुस्तक़िल ऐं मुसलसिल वारो अमल आहे. ॾिसो न, पोटेंशियल त तमामु घणो आहे. जेका सिख्या आहे न, जेके अंग्रेज़ी में असां लर्निंग चऊं था, इहा हिकिड़ी फितरी क़ाबिलियत आहे जेका हर इंसान में मौजूदु आहे. हर इंसान खे अलाह साईं इन सलाहियत सां नवाज़ियो आहे त हू सिखे थो, ऐं उन जे करे ई तव्हां ॾिसो त इंसान ॿोली बि सिखे थो, त सिंगिंग बि सिखे थो, त तरण बि सिखे थो, तमामु घणो कुझु XYZ पोटेंशियल आहे. ऐं हर इंसान में मुख़्तलिफ़ पोटेंशियल आहे. इहो बि तव्हांखे ॿुधायां त हर इंसान में सिखण जो साॻियो पोटेंशियल कोन्हे, ऐं सिखण में जेको रुझान अहम किरदारु अदा कंदो आहे. तव्हांजो जॾहिं रुझान हूंदो, एप्टीट्यूड हूंदो, उहो तव्हां वधीक बहितर नमूने सिखी सघंदव. हाणे जेका अॼु जे वक़्त जी सिचुएशन आहे, सूरत हाल आहे न, उहा ॾाढी ॾुखी आहे. छो जो अॼु जो जेको शागिर्दु आहे उहो पेपर खे हल करणु थो चाहे, पेपर खे पास करणु थो चाहे. हू बुनियादी तौर ते सिखण जो जज़्बे जी हुन में खोट थी वई आहे. हाणे जेका तव्हां ॻाल्हि कई न हाणे मोबाइल जी, हाणे AI अची वई आहे, उन खां अॻु में गूगल बि मौजूदु हुई. त शागिर्दु जेको अॻे हिकिड़ो त किताबनि ते इनसार कंदो हो, उस्तादनि ते इनसार कंदो हो, हाणे उनजो इनसार किताबनि तां ऐं उस्तादनि तां घटि थी वियो आहे, ऐं AI ते ऐं गूगल ते घणो थी वियो आहे. हाणे जॾहिं AI खां तव्हांखे शइ मिले थी या गूगल खां शइ मिले थी, हाणे उन शइ खे तव्हांखे सम्झणो पवंदो. सम्झण जे लाइ तव्हांखे वक़्तु ॾियणो पवंदो, ऐं उन जे लाइ तव्हां वटि नॉलेज, मालूमात जो हुजणु ज़रूरी आहे. पर अॼु जो जेको शागिर्दु आहे, शागिर्दु छा इंसान, हर शोबे में हू चाहे थो त मां सरसरी तौर ते सिखां ऐं एतिरो सिखां त को बि जेको मुंहिंजो कमु आहे उहो मां सरंजाम ॾेई वञा. हू कम खे सरंजाम त ॾेई थो वञे, पर उन में जेका हुनखे ख़ासि तौर ते हिकिड़ो असां चवंदा आहियूं महारत हासिलु थिए, उहा कोन थी थिए. जीअं हाणे अॼु बि ॻाल्हि कई, अॻे असां हेतिरो रियाज़ कंदा हुआसीं. तव्हां ॻाल्हि कई त ॾींहंनि जा ॾींहं जेका आहे उहा कंपोज़िंग लाइ पिया महिनत थींदी, हाणे उहो कमु 2-3 कलाक में ख़तमु थी थो वञे. ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त इन मां सिख्या कहिड़ी मिलंदी? उहा सिख्या जी जेका मयार हूंदो उहो यकीनी तौर ते घटि हूंदो. उहा साॻी ॻाल्हि शागिर्दनि सां थी वई आहे. बिल्कुलु सही. भाउ, हिते असल में टाइम जी असां वटि जेको आहे न थोरी घटिताई आहे, त इन जे करे कोशिशि असां इहा ई कंदासीं त तव्हांजा गाना थी वञनि हिते. त हींअर वरी मां तव्हांखे दावत ॾियणु चाहींदसि त कहिड़ो असांखे गानो ॿुधाईंदव? पुराणे टाइम जो गीत आहे उस्ताद ग़ुलाम शबीर समूह साहिब जो, अख़्तियार शाह साहिब जी शाइरी आहे, असां पेश ख़िदमत आहे. ऐ बादल मुंहिंजे शहर मथां, ऐ बादल मुंहिंजे शहर मथां,
अॼु मौसम में गमल्हार कयो अख़्तियार शाह जो दिल पर थो अचे अॼु रस्तनि ते छिणकार कयो ओ वसो बादल मुंहिंजो यार थो अचे ओ वसो बादल मुंहिंजो यार थो अचे अहिड़े नमूने बूंदा बरसण हर हंधि जीअं वसिकार थी पवे वसो ओ वसो बादल मुंहिंजो यार थो अचे ओ वसो बादल मुंहिंजो यार थो अचे सिज संदे ताब खे सफ़ा ढके छॾिजो सुणो साईं घुमे त होरियां होरियां सिजो सिज संदे ताब खे सफ़ा ढके छॾिजो सुणो साईं घुमे त होरियां होरियां वसिजो ईअं चवे त करार थो अचे ओ वसो बादल मुंहिंजो यार थो अचे ओ वसो बादल मुंहिंजो यार थो अचे हिकिड़ो सुहिणो हिकिड़ो सुहिणो जंहिंसां दिल आहे फाथी मना न सारी हयाती नौकर उनजे नाम जो मिलण खां अॻ में तखेड़ियूं मिलाईंदो अख़्तियार शाह सां गुजड़ो ॻाल्हाईंदो मिलण खां अॻ में तखेड़ियूं मिलाईंदो अख़्तियार शाह सां गुजड़ो ॻाल्हाईंदो मूंसां करण अॼु प्यारो थो अचे ओ वसो बादल मुंहिंजो यार थो अचे ओ वसो बादल मुंहिंजो यार थो अचे अहिड़े नमूने बूंदा बरसण हर हंधि जीअं वसिकार थी पवे वसो बादल मुंहिंजो यार थो अचे ओ वसो बादल मुंहिंजो यार थो अचे ओ वसो बादल मुंहिंजो यार थो अचे ओ वसो बादल मुंहिंजो यार थो अचे वाह वाह बहितरीन बहितरीन गानो पर तव्हांजे हिन गाने जेको आहे न मूंखे कुझु यादि ॾियारे छॾियो ऐं उहा ॻाल्हि हिते मां ज़रूरु शेयर करणु चाहींदसि त जंहिं टाइम मुंहिंजी शादी थी हुई ऐं मां जॾहिं
पाकिस्तान खां ॿाहिरि शिफ्ट थी वियमि त मुंहिंजो बाबा हिन दुनिया में न आहे, अलाह सां हुननि खे जनरल फिरदौस में आला मुक़ाम अता करे, मुंहिंजो इंतज़ारु कंदो हुयो। मां नंढी भाउ भेणनि में ऐं बाबा सां घणी अटैचमेंट, त हू मुंहिंजे अचण जो इंतज़ारु कंदो हुयो ऐं अक्सर चवंदो हुयो ए अबरे करम इतना न बरस के वो आ ना सके, और जब वो आ जाए तो खुल के बरस के फिर वो जा ना सके। त तव्हांजे इन गाने मूंखे उहे लफ़्ज़ यादि ॾियारे छॾिया ऐं वाक़ई इहे मेमोरीज़ हूंदियूं आहिनि। ऐं अक्सर करे अबू जी आदत हूंदी हुई त को न को कोटेशन, काई न काई अहिड़ी शइ फेसबुक ते ज़रूरु लिखंदो हुयो, त उहे जॾहिं मेमोरीज़ ईंदियूं आहिनि न, ऐं उन में सभिनि खां पहिरियों जेको टैग कंदो हुयो न, उहो मूंखे कंदो हुयो। त इहे शयूं जॾहिं यादि ईंदियूं आहिनि न, त ख़ुशी त पंहिंजी जाइ ते थींदी आहे, पर उहे प्यारा जॾहिं न हूंदा न, ॾाढो ॾुख बि थींदो आहे, तकलीफ़ थींदी आहे। ऐं ख़ासि करे इहे जेके प्यारा, जेके तव्हां सां अनकंडीशनल लव जेको कंदा आहिनि, जेका हिकिड़ी मोहबत तव्हां सां जेका कंदा आहिनि, बग़ैर कंहिं मतिलब जे जेको तव्हां सां प्यारु कंदा आहिनि, माउ पीउ जी मोहबत त हूअं ई मतिलबु हिकिड़ी अनकंडीशनल थी वञे न, कंहिं बग़ैर कंहिं मतिलब जे। ऐं माउ त पंहिंजे औलाद सां उन वक़्त खां प्यारु करणु शुरू थी करे जॾहिं हू दुनिया में आयो ई न आहे। हिकिड़ो अहसासु आहे, सिर्फ़ु हिकिड़ो अहसासु आहे, ऐं बग़ैर पंहिंजे औलाद जे शक्ल ॾिसे ई हू पंहिंजे औलाद सां जेका मोहबत थी करे न, त उहा अज़ीम मोहबत आहे। बिल्कुलु। छा चवणु चाहींदव तव्हां इन अनमोल मोहबत जे लाइ? सभ खां पहिरियां त जेका तव्हां ॻाल्हि कई न, माउ जी जेका मोहबत आहे उहा अनमोल आहे ई आहे, पर उहा हिकिड़े जीअं साईं गानो ॻायो न, बादल मुंहिंजे सिज जे साम्हूं अची वञे त उहो हले त उनखे करार अचे। त माउ जी जेका मोहबत आहे उहा अहिड़ी आहे, ऐं उन्हनि जी जेका मौजूदगी आहे उहा ईअं ई आहे जीअं तव्हांजे मथां ककर बसंदा ऐं तव्हां महसूसु कंदा। उहे न ॿारु किरे थो त माउ उनखे खणे थी, ऐं जॾहिं को तूफ़ान अचे थो त पीउ हुनजे मथां छपर छांव थी बीहे थो। त इहे उहे लफ़्ज़ आहिनि, उहे शयूं आहिनि जेके इंसान खे सम्झण जी ज़रूरत आहे। सम्झो अञा बि वक़्तु अथव, सम्झो। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु तव्हांखे इहो चवंदसि त इहे अनमोल रिश्ता आहिनि, सम्झो इन्हनि रिश्तनि खे। ॾाढा क़ीमती अथव। अॼु बि वक़्तु अथव, पंहिंजे माउ पीउ जे क़दमनि में किरी पओ, माफ़ियूं घुरो उन्हनि खां। सुभाणे जेकॾहिं इहे न हूंदा ॾाढो पछताईंदव, इहे पेर ॻोल्हींदव त इन्हनि पेरनि खे चुमियूं, ऐं उहे दुआउनि जा हथ ॻोल्हींदव त उहे हथ काॾे विया जेके असांजे लाइ हर वक़्तु दुआऊं कंदा हुया। सो अञा बि वक़्तु अथव, पंहिंजो पाण खे संभालियो ऐं पंहिंजे माउ पीउ जी तरफ़ वापसि वरो। सो सर, इहे ॻाल्हियूं त थींदियूं ई रहंदियूं ऐं ज़रूरी बि आहिनि। मां थोरो तव्हांखे विच में ॻाल्हायां, मां थोरो बहरहाल जज़्बाती थी न ज़ाहिर आहे, इंसान थिए थो, इमोशनल थिए थो। माउ माउ जी जेका मोहबत आहे न, उहा अटल, बेलोस ऐं बग़ैर कंहिं लालच लोभ जे आहे। ऐं अॼु जे दौर में मां त चवां थो त माउ त ख़ैर आहे ई, अलाह जो हिकिड़ो अतियो आहे, पर मां चवां थो त असांखे किथां मोहबत मिले न, त उन मोहबत जो क़दुरु करणु घुरिजे। उहा मोहबत कहिड़े बि रिश्ते जी सूरत में हुजे, ज़ाल जी सूरत में, मुड़ुस जी सूरत में, भाउ जी सूरत में, भेण जी सूरत में, या उस्ताद जी सूरत में, शागिर्द जी सूरत में, पाड़ेसरी जी सूरत में, दोस्त जी सूरत में। छो जो जेको अॼु जो दौरु आहे न, इन में तमामु घणी जेका क़ीमती शइ आहे न, उहा मोहबत आहे। ऐं मोहबत ख़बर अथव मां छा खे चवंदो आहियां? मोहबत इहा न आहे त मां कंहिंखे बि चवां मूंखे ॾाढो तूं प्यारो आहीं, पर मोहबत उहा आहे त मुंहिंजो अमल साबित करे त हू मूंखे प्यारो आहे। मां तमामु घणी दावा कयां मूंखे तूं प्यारो आहीं, पर मुंहिंजो अमल उहो साबित न करे, त उहा मोहबत कान्हे। ऐं असां इंसाननि खे बिल्कुलु घुरिजे त हर उन रिश्ते जो क़दुरु कयूं जेको असां सां उहा मोहबत करे थो जेका हुनजे अमल मां ज़ाहिर थिए थी। सही ॻाल्हि आहे। बाक़ी जेका ज़बान वारी मोहबत आहे
उहा मोहबत मुंहिंजे वेझो मोहबत ई कान्हे. मोहबत आहे जीअं माउ आहे न, कहिड़ी माउ आहे जेका जॾहिं औलाद न अचे ऐं हुनखे निंड अची वञे. मां चवां थो त 100 मां शायदि हिकिड़ी माउ अहिड़ी हुजे जंहिंजो औलाद घर न अचे ऐं हुनखे निंड अची वञे. अहिड़ी काई मां कोन ॾिठी आहे. मां उहा ई ॻाल्हि थो कयां, शायदि को हिकिड़ी हुजे. अहिड़ी काई मां त पंहिंजे ॿार जे कदमनि जी आहट खे सुञाणे थी त दर ते पुॻो आहे ऐं आयो हाणे बेल वॼाईंदो. बेल वॼाईंदो, बिल्कुलु. सो बहरहाल असांखे माली या शयुनि जी मोहबत खां वधी करे इंसान जी मोहबत जो क़दुरु करणु खपे ऐं इंसान सां मोहबत करणु खपे. ॾिसो न, तव्हां जॾहिं डिफेंस जी तरफ़ वञो, माण्हू को कुतनि खे बि था विंजारनि, को कुतनि खे बि था डोड़ाइनि, को ॿिलियुनि खे कछनि में था. मां इहो नथो चवां त तव्हां हिननि सां मोहबत न कयो, पर मोहबत जो असुलु हक़दार इंसानु आहे. तव्हांजो माइटु आहे, तव्हांजो पाड़े वारो आहे, हर उहो रिश्तो जंहिंसां तव्हांजो तालुक़ु आहे उहो तव्हांजी मोहबत जो वधीक हक़दार आहे. बिल्कुलु. ऐं ईअं जीअं तव्हां जानवरनि जो ज़िक्र कयो त इंसान पंहिंजी ख़ुशी जे लाइ, पंहिंजी अकेलाइप खे ख़तमु करण जे लाइ बि जानवर या पखी पालनि था, त उन में बि उन्हनि सां जेका मोहबत थिए थी उहा बि बिलॉस मोहबत आहे. उन जो बि जेको हिकिड़ो असांखे मतिलबु चइजे न त अगरि तव्हां कंहिंखे तहफ़ुज़ बि ॾियो था त इहो बि हिकिड़ो सवाब जो कमु आहे. मां हिन में हिकिड़ी तव्हांखे बसि नंढड़ी ॻाल्हि शेयर कयां. जानवर सां जॾहिं तव्हां मोहबत कयो था त जानवर बि तव्हां सां मोहबत करे थो. बिल्कुलु करे. असां वटि हिकिड़ो कुतो हूंदो हुयो, उनखे मुंहिंजे ॾाॾे सां ई नालो मोती रखियो हुयो. पोइ उन कंहिंखे इतफ़ाक़ सां को चक हयो या छा, त मुंहिंजे ॾाॾे चयोसि त घरां निकिरी वञे. त उहो निकिरी वियो. ओतिरे ताईं न आयो जॾहिं मुंहिंजो ॾाॾो साईं मरूम वञी वठी न आयुसि. माना चयईंसि त हाणे तूं हल. पोइ उहो वरी औताक में दाख़िल थियो. इन मां तव्हां अंदाज़ो कयो त जानवर जी हिकिड़े तरफ़ मोहबत, ॿिए तरफ़ हुकुम जी तामील. माना ॾाॾे चयोसि निकिरी वञि, उहो औताक खां ॿाहिरि निकिरी वियो, वञी घटी में वेही रहियो. जॾहिं ॾाॾे साईं जी कावड़ घटि थी, पोइ वियो, हुनखे चयईसि हाणे अचु तो औताक ते, पोइ हलियो आयो. इन मां तव्हां अंदाज़ो कयो त जानवर बि इंसान सां केतिरी मोहबत कनि. बिल्कुलु करे थो. ऐं वॾी महिरबानी सर, तव्हां आया, तव्हां सां ॻाल्हियूं थियूं, थोरा इमोशनल बि थियासीं ऐं थोरियूं ज़रूरी बि ॻाल्हियूं थियूं. बुनियादी तौर ते अॼु मूंखे उन ई करे सुठो लॻो त हूअं अक्सर जॾहिं बि मां प्रोग्राम में किथे वञा थो तालीम जी ॻाल्हि घणी थिए थी. अॼु असांजे अहसासनि जी ॻाल्हि थी आहे, असांजे जज़्बनि जी ॻाल्हि थी आहे. ऐं साईं जेको गानो ॿुधायो, मां उन करे साईं खे चयो आहे गानो हुजे प्यार मोहबत जो, रुगो ॾुख जेको आहे न, ॾुख ज़िंदगी में उहे मिलंदा रहनि था, उन करे प्यार मोहबत जी ॻाल्हि हुजणु खपे. इलाही टची हुयो न, असां इंसान जो इलाही मेमोरीज़ बि जेको आहे न रिकॉल थी वियूं. सो इलाही सुठो गानो हुयो, बहितरीनु माशाल्लाह. ऐं तव्हांजी आवाज़ जी तारीफ़ करणु चाहींदसि. आवाज़ बि तव्हांजी ॾाढी सुठी आहे. मां पंहिंजी टीम खे, तव्हां ॻायो पिया त मां पंहिंजी टीम खे इहो ई इशारो कयो त तव्हांजी आवाज़ इलाही खुलियल आहे. ऐं माशाल्लाह, अलाह साईं तव्हांखे अञा बरकत ॾिए तव्हांजे कम में, ऐं तव्हां ईअं कमु कंदा रहो ऐं सुठा सुठा गाना असांखे ईंदा रहो. सो कोई मैसेज ॾियणु चाहींदव? बसि मैसेज मां इहो ई ॾिनो त मोहबत कयो ऐं मोहबत करण वारनि जो क़दुरु कयो. सही. तव्हां कोई मैसेज ॾींदव? मैसेज इहो आहे त इंसान सां प्यारु कयो, हर हुन सां वरी शइ सां प्यारु कयो जेको जंहिं शइ हक़दारु आहे. सही. ऐं वेंदे वेंदे तव्हां खां गानो ज़रूरु ॿुधंदासीं. जी, आख़िरी गीत आउं ॿुधाईंदुमि. मुंहिंजी पंहिंजी पसंदि जो गीत आहे, जवाद साहिब जाफ़री साहिब जो शाइरी आहे. सो साईं पेश ख़िदमत. मां त ख़ुदाफ़िज़ करे वठां तेसीं ताईं. जी व्यूअर्स, इंशाअल्लाह तव्हां सां सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं. तेसीं ताईं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो. मूंखे ऐं RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. जी. जिया जिया वसे मींहुं, तिया तिया पोई याद तूं, अण खुटवा बखिन मां थो वग़ैरह त्या ॾींहुं.
नाज़िक तुंहिंजो नींहुं मूं त साह बराबर सांढियो हिजर में हजू नहारे जा हिजर में हजू नहारे जा मुखे एतिरो नसार जा मुखे एतिरो नसार जा हिजर में हजू नहारे जा है हिजर में हजू नहारे जा मुखे एतिरो नसार जा मुखे एतिरो नसार जा कहीं चलाए पाए थोलिया तो बारे कहीं जिया सजा दिया ओ कहीं चलाए पाए थोलिया तो बारे कहीं जिया सजा दिया कहीं भी वाटते न बारी जाए कहीं भी वाटते न बारी जाए मुखे एतिरो नसार जाए मुखे एतिरो नसार जाए हाँ कहीं भी मोड़ते अगर ओचितो गची बना नजर हाँ कहीं भी मोड़ते अगर ओचितो गची बना नजर मुखे प्यार सा पुकारी जाए मुखे प्यार सा पुकारी जाए मुखे एतिरो नसार जाए मुखे एतिरो नसार जाए हिजर में हजू नहार जाए मुखे एतिरो नसार जाए मुखे एतिरो नसार जाए तंगी जे करे कदें हली जाफिरी जी याद खे भली हो तंगी जे करे कदें हली जाफिरी जी याद खे भली दिल मजा खणी धिकार जाए दिल मजा खणी धिकार जाए मुखे एतिरो नसार जाए मुखे एतिरो नसार जाए हिजर में हजू नहार जाए हिजर में हजू नहार